idea of variables come from the idea of this word variables comes from the word vary. क्या होता है मतलब vary का? What do you mean by vary? Yes. So something that can have different values is known as variable. कोई भी चीज, anything at all that can have different values is a variable for a researcher. Opinion of people is a variable, height of a person is a variable, weight of a person is a variable, the kind of food they eat is a variable, or number of marks a student receives is a variable, number of topics that will be taught this semester is a variable. Anything at all, your percentage, your attendance, your fee amount, anything is a variable. कोई भी चीज जिसकी वैल्यू जो है वो बदलती है, बदल सकती है, आप उसको वेरिएबल बोलते हैं. Another thing which is important for variable is to understand variable has to be somehow measurable. Somehow, when I'm saying somehow, it means this somehow could be quantitative, this could also be qualitative. जैसे मैंने opinion बोला, अगर मैं आप लोगों की opinion जानना चाहूँ and I say that I would like you people to rate my teaching, let's say on a scale of 1 to 10. तो यहाँ पर मैं आपसे ओपिनियन पूछ रही हूँ, बट दिस इज मेजरेबल बिकॉज आई एम गिविंग यू अ स्केल. लेट्स से आई इवन डोंट गिव यू स्केल, आई आस्क यू टू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वे आई टीच, and then you are giving me your answer. So you are helping me in measuring your opinion. So this is also a variable. Anything that you can measure that has different values is a variable. और ये जो मेजरमेंट है ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, यानी कि न्यूमेरिक भी हो सकता है और वर्ड फॉर्म में भी हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत तरह से होते हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट से दैट वन वेरिएबल हैज fixed kind of identity. Okay, why I'm saying this? For example, whether you'll be able to plan an outing today depends on weather condition. So outing, it will be there, it will not be there, variable, depends on weather, but then weather depends on, or you'll have rain or sunlight depends on, western disturbance, maybe something else. So there could be so many different things. This could also be variable, this could also be variable, and they can change role also. Okay, so we'll be talking about types. You just need to remember that there cannot be one fixed identity of any variable. एक किसी वेरिएबल की फिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकती. आज कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी और स्टडी में वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है. So we will be talking about types of variables, starting with independent and dependent. Sorry. Why we are starting with independent and dependent? Because when we are doing research, the first thing that a researcher has in mind is cause and effect. First thing that you have in your mind is cause and effect. Okay, so there are protests going on. What is the cause? The cause is that you have this new bill for farmers given by the ruling party. So you have cause, you have effect. There could be many other reasons, but you are more interested in cause and effect. So this idea of trying to figure out the reason, the cause, and then to understand what is the effect. You saw one news on some TV channel, or you saw one post on Facebook, and then you started reacting to it. So cause is the post, effect is your reaction. So as a researcher, we are
most importantly, most commonly concerned about cause and effect. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, then you say that you have fever today or you have some pain today. What he is concerned with the most, he is concerned with finding the cause, because he can provide you a solution only when he knows the cause. So when a researcher is working on a research problem, he is also interested in looking for the cause, and that is why the first type that we'll be studying is independent and dependent variable. Why? Because independent variable is the variable that causes an effect on the dependent variable. आप नाम से ही समझ सकते हो. Independent variable is a variable that causes an effect on the dependent variable. Independent variable जो स्वतंत्र वेरिएबल है उसका प्रभाव पड़ता है यहाँ पर dependent variable के ऊपर. And that is why we are trying to understand these two variables. और क्या आइडिया है जिससे हम इसको और बेहतर समझ सकते हैं? The idea is this: because this is independent and this is the cause, what a researcher does is researcher tries to manipulate it. यहाँ पर manipulate से मतलब वैसा नहीं है जैसा media manipulation होता है. यहाँ पर manipulate से मतलब है you would like to change the independent variable a bit to see how it impacts the dependent variable. For example, if I say that teaching is independent variable and your marks are the effect of it, then I might say that let's change the way teaching is done. Instead of books, let's go about visual teaching. Let's go about online teaching. Let's go about more interactive teaching through on-field exercises. So why I am changing the way of teaching? Because I want to see the impact or the effect on the dependent variable. So independent variable is the variable which is manipulated by the researcher. Researcher इसको change करता है, इसकी real जो existence है उसमें variation लाता है ताकि dependent variable को देखा जा सके. जैसे कि agriculture में कैसे होता है ये? You select a field and then you divide it into two parts. One part will have no use of fertilizers, another part will have use of fertilizers, and then you will see the effect of the fertilizers on the crops. So इस तरीके से आप मैनिपुलेशन करते हो. अगर आपको ओपिनियन लोगों की देखनी है तो आप कैसे करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट? अगर आप मान लीजिए किसी फेमस सेलिब्रिटी की या पॉलिटिशियन की ओपिनियन, उनके बारे में जो ओपिनियन लोगों की है वो जानना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ग्रुप को आप बिल्कुल भी मीडिया से दूर, मीडिया का संपर्क उनसे नहीं होने दें. दे डू नॉट हैव एक्सेस टू टीवी, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू न्यूज़पेपर, they do not have access to social media. They are just doing their normal work and they have their own opinion. And one group you are exposing it to TV channels, to newspapers, और newspapers और channels भी आप control कर रहे हो किस न्यूज़ चैनल की या न्यूज़पेपर की एक्सेस है. एंड देन यू विल सी कि उनका इम्पैक्ट ओपिनियन पे कैसे पड़ रहा है, और तब आप बात कर सकते हो वेदर आफ्टर वॉचिंग वन चैनल और वन रीडिंग वन न्यूज़पेपर फॉर अ मंथ हैज इट चेंज देयर ओपिनियन or has it not. इससे आपको पता चलता है. This is how you do research and this is how you try to figure out cause and effect. Sometimes we say that media is giving false information and media is doing like this, media is doing negative journalism. So how to see the impact? Can you see the impact just by asking questions? No. The best way to see the impact is having a group of people, dividing it into two groups or maybe 3-4 groups and exposing them to particular channels or newspapers, and then seeing the impact of how it is changing their opinion. Because opinion is not just changed by watching one news channel. Opinion you have, most of the mental development is done within the age group of 3 to 7 years. उससे पहले आपकी बेसिक मेमोरी बिल्डअप हो रही होती है, और 3 to 7 में you learn more about the society and you get the basic instinct more fixated in your mind, and rest is just advancement in that. So if we blame media channels for some kind of opinion change, no, it is not there. Yes, it might trigger the way you actually are. It might act as a catalyst. It might act as the trigger point for what actually you have in your mind. So that is how you can talk about it. This is just an example.
You can use this sentence with the fill in the blanks to understand the independent and dependent variable. I would like you people to write this sentence in your notebook or paper or laptop, whatever you have with you. Just write the sentence, the fill in the blanks causes a change in the, again fill in the blanks, and it is not possible that a, again fill in the blanks, causes change in. अब यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को जब रखते हैं तो आपको जवाब बहुत इजीली मिल जाता है. I'll repeat again. The independent variable causes a change in the dependent variable, and it is not possible that a dependent variable causes a change in the independent variable. यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डालता है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव डाले. Again, coming back to this example, weather might impact your decision to go out, but your decision to go out or not can certainly not have any effect on the weather. Whether you go out or not, weather remains unaffected. So that is how you can understand. Please write down this sentence in your notebooks. Are you people writing? Okay. 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 I'll just repeat the sentence here. The independent variable causes a change in the dependent variable, and it is not possible that a dependent variable causes a change in the independent variable. Okay? Once you have finished writing this sentence. Okay. So now we are done with independent and dependent. Now we'll be talking about the other variables. ये तो दो important variables हैं जो cause and effect को हमारे को help करते हैं study करने में. इसके अलावा हम variables को कैसे समझ सकते हैं? We'll be talking about that. Okay. So here we go. One is numeric variable. Something that you are working in terms of number. A simple variable where you are working with numbers can be identified as numeric variable. Another variable, continuous variable. Continuous variable is like a variable that is measured and not counted. इसको आप measure करते हो, count नहीं कर सकते. जैसे कि weight, height, इनको आपको measure करना पड़ेगा एक measurement system से. इनको आप count नहीं कर सकते हैं. इससे opposite है discrete variable. Discrete variable को आप count करते हैं, measure नहीं करते हैं. For example, number of students in class. एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं इसको आप काउंट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं कोई सिस्टम लेके कि इतने किलो या इतने सेंटीमीटर है. ओके, यू कैन नॉट डू दैट. एंड देन यू हैव other variable, that is
categorical, that comes from the word category. So categorical variable. Categorical variable depends on the categories that you have. For example, if I say the category of gender, as earlier defined, it was male and female. How do we write it now? Male, female, and third gender. So earlier it was dichotomous, now it is trichotomous. यानी कि पहले दो कैटेगरीज होती थी, अब तीन कैटेगरीज होती हैं. खैर अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कैटेगरी से. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. कैटेगरी से मतलब है जब किसी भी वेरिएबल की आप कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल इनकम, यू माइट से rich or middle class or poor class, or you can put into address or areas, rural, urban. So these could be the ways how you can give different categories to your variable. जैसे अगर आप किसी का सर्वे करना चाहेंगे and you're doing a survey for let's say some sociological reason or some economic reason, so you would have many categories which are important for you to understand. If this person is illiterate or not, if illiterate, which gender does it belong to? Male, female, or third? Okay, fine. Female, which region does it belong to? Rural or urban? Because in rural areas, if you have a female who is not literate, then your concerns are different. If in urban area, a female is not literate, then your concerns are different. If in both the regions, a third gender person is literate, then you have something positive going on there. So categories are very important. Just by simply using categories, you can come to a very good conclusion or interpretation. And then you have other variables which are extraneous. I'll write their name together. Extraneous, because these are linked. Confounding, intervening, controlled. So these are four types of variables which are very much related to each other, and it is very much possible that you feel a lot of confusion between these four. इसलिए इनको एक साथ लिखा है ताकि हम इनके बीच के डिफरेंस को स्टडी कर सकें. सबसे पहले इंटरवेनिंग वेरिएबल पे आते हैं. इंटरवेनिंग वेरिएबल कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटरवेन. इंटरवेन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बीच में आके हस्तक्षेप करना, यू नो, इंटरवेन इनटू समथिंग. अब आप यहाँ पर एक ऐसे वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बीच में इंटरवेन कर सकता है, उसके बीच में हस्तक्षेप कर सकता है. लेकिन ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है जिसको कि आप किसी भी तरीके से मेजर करके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग का इम्पैक्ट स्टूडेंट के ऊपर या स्टूडेंट के रिजल्ट के ऊपर. अब स्टूडेंट अलग अलग तरह से हो सकते हैं. हो सकता है किसी ने इंडिविजुअली उस टॉपिक को अलग से पढ़ा हो, किसी को लैंग्वेज में बहुत ही इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही कंफर्टेबल लगती हो तो उसको उस टॉपिक को समझना इजी हो रहा हो, किसी को वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो वो विजुअल मेथड से जल्दी समझ रहा हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ सम थिंग्स, मे बी यू हैव heard something about that topic and that is helping you in understanding it more clearly. Maybe you have read something about it, you have had some kind of exposure to that topic during your growing up, in your family or in your neighborhood. आप इस ऐसे टॉपिक के बीच रहे हैं, आपने कुछ ऐसा देखा है, समझा है जिसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे पड़ा है और वो आपको हेल्प कर रहा है समझने में. बट दिस इज नॉट समथिंग यू कैन मेजर, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल इन योर रिसर्च. इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें यू कॉल इंटरवेनिंग. दीज आर मोर लाइक साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स विच आर देयर, डेफिनेटली देयर, यू कैन टॉक अबाउट देम, but there is no way you are able to control them. Then you have extraneous variable. यहाँ जो मतलब है extraneous का, that comes from the word extra.
ये ऐसे एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं जिनको रिसर्चर इंटेंशनली अपने रिसर्च में नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो उनको इंक्लूड करने से जो रिलेशनशिप आप पढ़ रहे हो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. सो इंटेंशनली यू डू नो that kind of variable could be there, इसका impact पड़ सकता है, but you don't take that variable into account. That is an extra variable for you, that is extraneous variable. अब आते हैं कंफाउंडिंग और कंट्रोल्ड वेरिएबल पर. कंट्रोल वेरिएबल वो हैं जिनको कि आपने अपने रिसर्च में कंट्रोल कर लिया है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप में कोई असर नहीं डाल रही. फॉर एग्जाम्पल, वी वर टॉकिंग अबाउट impact of teaching on students' marks. So we were talking about the subject that is language English. So what we are doing, we are talking about graduation course, BA in English, and how we are controlling the variable. We have this one variable that students could be coming, those who have done 12th in different subjects, maybe science, arts or commerce. So in order to control it, we are selecting students, all those who come from same stream, whether science or commerce or arts. All students coming from single stream, single discipline. What it is doing to our research? It is helping us in controlling that change in stream or change in discipline might have some impact on the way they will be understanding English in classes done by your teacher for your research. इस रिसर्च के लिए, इस टॉपिक के लिए आपने जो एक वेरिएबल था जिसका इम्पैक्ट पड़ सकता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसको आपने चेंज कर लिया. हो सकता है अगर कुछ बच्चे आर्ट्स के होते हैं, कुछ साइंस के होते हैं, जो आर्ट्स वाले जो इंग्लिश पहले पढ़ के आए हैं उनका स्कोर अच्छा होता, irrespective of how it has been taught. But when you are selecting students from one single discipline, so they are coming from the same background and the effect of the teaching will be quite similar because they have been exposed to similar subjects. So that is how you are controlling. Now the last one, that is confounding variables. What is confounding variables? Confounding variables are variables that have impact on your independent variable, that have impact on your dependent variable, and you really need to understand how these are impacting your independent variable and dependent variable in order to see whether you have a proper cause and effect relationship or not. कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव डाल रहा है और उनकी रिलेशनशिप जो है उस पे असर डाल रहा है, तो आपको उसको समझना पड़ेगा. और आप उसको जब समझ जाते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको किस तरीके से लिमिट कर सकते हैं. और जब अगर आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे तो वो कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगा. कंट्रोल नहीं हो पाएगा, दैट विल बी एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप उसको दोनों तरफ से उसके इम्पैक्ट को, उसके इफेक्ट को समझ पा रहे हैं, तो ऐसा वेरिएबल आपके रिसर्च में कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है. ये क्लियर हुआ? ओके ओके, सी वी हैव 4 वेरिएबल्स हेयर. हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर चार वेरिएबल्स की. इन चारों वेरिएबल्स को, इस रिलेशनशिप को ध्यान में रख के समझते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड अवर एग्जांपल इज सेम, इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स मार्क्स. अब स्टूडेंट्स के अपनी खुद की एक्सपोजर, जैसे हमने बोला कि हमने कंट्रोल कर लिया कि एक सिंगल डिसिप्लिन या सिंगल फील्ड से बच्चे आ रहे हैं, तो वो आपका कंट्रोल्ड वेरिएबल हो गया. लेकिन मे बी इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन, मान लीजिए डिसिप्लिन उनकी कॉमर्स है, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन, बट few of them, they live in an environment where they are more exposed to Western culture. They watch English films, they listen to English music, and they have people, those who, family members, those who are staying abroad, and they have more routine exposure to English language.
So this exposure, the way they have learned through their experience, the kind of ideas they have in mind, such kind of thing could be intervening variable. You cannot calculate it, but it is there in their mind. What could be the extraneous variable here? Extraneous variable could be anything which is extra. For example, some student might score better because they are intentionally they are going out, maybe taking tuitions, maybe working extra hard after classes, maybe doing something else, and you know that this might impact your research, but intentionally you are not taking this into account. This could be your extraneous variable. Now here, confounding variable. What could be your confounding variable? Confounding variable could be any variable that might be impacting the relationship between independent and dependent variable. For example, if this teaching is going through online mode, then network is one confounding variable. You have network issues. Network issue might impact the way the teacher is teaching. It might also affect the way the student is learning. So you have one variable that can literally spoil the relationship between independent variable and dependent variable. So this is confounding variable. And this variable, if you are able to control somehow, then this will be put into the category of controlled variable. Now is it clear? Okay. So other than this, we have two, three more variables, but they are more close to understanding the relationship between variables. I'll just explain. अभी इसके अलावा और भी वेरिएबल्स हैं, जैसे वी हैव मीडिएटिंग वेरिएबल, वी आल्सो हैव मॉडरेटिंग वेरिएबल, and then we have variables like nominal and ordinal. These kind of variables, I'm just giving you a name. Why I'm not explaining these right now? Because these two are related to relationship between variables, and these are related to scaling of variables. जैसे मैंने भी आपको बताया था कैटेगरी वाला, तो वो स्केलिंग वेरिएबल्स में आते हैं. इन वेरिएबल्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे जब हम रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे. रिलेशनशिप कैसे कैसे हो सकती है? रिलेशनशिप हो सकती है कॉज एंड इफेक्ट की. आपने कुछ ठंडा खाया और आपको जुकाम हो गया या फीवर हो गया, आप भीगे और आपको फीवर हो गया. और इसके अलावा हो सकती है कोरिलेशन. कोरिलेशन मतलब you went out, but you are wearing a sweater, you didn't have anything cold there, you went out and maybe you might have come in contact with somebody who had fever or who was exposed to viral, and then maybe you have touched something or something. So in going out, getting exposed to winter weather and your fever, there is a relationship, but not cause and effect relationship. Directly it has not given you fever. So this way we have different ways we can understand relationship. I'll give you one more example here. अभी हम लोग बात कर रहे हैं cause and effect की. So we were talking about eating something cold and then getting fever. This is simple. Independent variable and dependent variable. Now let's say that you had cold already. You were sneezing and then you were feeling something, some kind of rash in your throat. Then what you did? Then you went out without a proper jacket and then you got fever. So what is happening? You already had something and you got the dependent variable. What is jacket here? Jacket mediated the relationship between these two. जैकेट ने इस रिलेशनशिप को मीडिएट कर, यानी कि उसकी एब्सेंस ने, उसकी क्वालिटी ने यहाँ पर आपको कोल्ड से फीवर तक पहुंचा दिया. और अगर हम बात करें जैकेट की प्रेजेंस और एब्सेंस की, तो हम बात कर सकते हैं मीडिएटिंग. और अगर हम बोलें दैट instead of let's talk about taking a shower, cold shower or hot shower. You took a cold shower and you already had
rashes or you were sneezing or something because you had a cold shower or यू हैड अ हॉट शावर. ये डिफरेंस है यहाँ पर. ये काम करेगा एक तरीके से मॉडरेट करने का. मॉडरेट कैसे? अगर कोल्ड है तो आपका फीवर हो सकता है, बढ़ सकता है. हॉट है तो हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी ठीक रहे. सो मॉडरेटर वेरिएबल भी होते हैं जो कि दो चीज के रिलेशनशिप के बीच में मॉडरेट करने का काम करते हैं. सो वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स.